हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ आवर अफ्रीकन लिटरेचर सीरीज, जहाँ पे हम टीजीटी इंग्लिश को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं DSSSB एग्जाम के पर्पज से। टुडे वी विल बी स्टडिंग वोल सोइंका एंड द वर्क्स ही हैज डन एंड क्वेश्चंस जो कि अभी हाल फिलहाल में ही DSSSB PGT इंग्लिश एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 में। तो बेस्ड ऑन दैट पैटर्न वी विल बी कवरिंग few of the questions that were previously asked और अभी क्या क्वेश्चन उस बेस पे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वोल सोइंका पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं। इनका जन्म 1934 में नाइजीरिया में हुआ था और लैंग्वेज जो है योरूबा आपको पढ़ने के लिए बहुत बार दिस विल कम इन क्वेश्चन एंड इन डिस्कशन, तो आप इसको भी याद रखें। फिर नोबेल प्राइज जो है सो 1986 में he was the first African laureate। themes जो होते हैं अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर टू चिनुआ अचीबे, colonialism, corruption, power, आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो की वर्क्स हैं इसी पे हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको अगेन योरूबा इग्बो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो डांस ऑफ द फॉरेस्ट है जो कि वन ऑफ हिज मेजर वर्क्स है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगेन द लायन एंड द ज्यूल, डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, द मैन डाइड 1972। इनको पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट भी हुआ था नाइजीरियन सिविल वॉर के दौरान, जिसको हम बायोफ्रान वॉर भी कहते हैं। नाइजीरियन सिविल वॉर, जिसके दौरान नाइजीरियन सिविल वॉर इफ यू सी इट लास्टेड बिटवीन 1967 एंड 1970। तो इस बीच में he tried to be the mediator. The war was between east and the west side। तो उन दोनों के बीच में वॉर था, जिसको इन्होंने he tried to become the mediator। secessionist भी कहते थे, those who wanted to free away themselves because of oppression they felt। तो ये सब चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, but let's start with the video and the questions। So yeah, like we were discussing about बायोफ्रान वॉर, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बायोफ्रान वॉर के बारे में। तो इट वाज अ नाइजीरियन सिविल वॉर, जो कि मैंने बता दिया आपको कि ईस्टर्न रीजन के साथ में ये फॉट किया गया था 1967 से। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1967 से 1970 के बीच में इट वाज फॉट, एंड इट वाज द मेजर रीजन व्हाई दिस वॉर वाज फॉट वाज बिकॉज ऑफ एथनिक टेंशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, तो यू में रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको भी आप याद रखें। और इसी बीच में वोल सोइंका को इम्प्रिजन भी किया गया था, और कितने समय के लिए इम्प्रिजन किया गया था, तो ये यहाँ पे आपको बताया 27 मंथ्स के लिए। तो रिमेंबर दिस 27 months। वॉर, व्हाट वाज द रिजल्ट? ऑब्वियसली देयर इज नो विनर्स इन द वॉर, ऐसा कहा जाता है। लगभग 1 मिलियन डेथ्स भी हुए थे इसमें। इट इज रिजल्टेड इन, इट वाज अ हॉरिफिक वॉर। नाउ अब एज एन एग्जांपल मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, 1967 में जो ये स्टार्ट हुआ 1970 तक चली थी ये वॉर। तो इट वाज इग्बो डोमिनेटेड ईस्टर्न रीजन था जिससे वॉर था। लेट्स गो टू द मैप एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो इफ यू कैन सी इट वाज द, दिस इज बायोफ्रा, सी दिस इज बायोफ्रा, जिन्होंने रिवॉल्ट किया था एंड दे वांटेड टू गेट अवे। दिस इज द वेस्टर्न रीजन, this is the eastern region, this is the part of Nigeria that we have, right? So the war was between the two। इनको ही secessionist भी कहते हैं, which are in a way rebel or separatist। and secessionist basically what they want is they support the act of secession, means withdrawal of a state from nation because they feel oppressed, or there are many reasons which we have already seen। तो 1967 में इग्बो डोमिनेटेड ईस्टर्न रीजन ऑफ नाइजीरिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड फॉर्म्ड रिपब्लिक ऑफ बायोफ्रा। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बायोफ्रा बना लिया, लेकिन बाद में वो फिर हार गए और उसको नाइजीरिया में ही एब्जॉर्ब कर लिया गया।
साउथ सूडान का वैसा ही एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू, कि साउथ सूडान विच वाज फॉर्मरली अ पार्ट ऑफ सूडान, उसको भी 2011 में इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। तो जस्ट बायफ्रान वॉर याद रखें आप, आगे भी वी विल सी, आगे हम पढ़ेंगे इसको, while we will be covering other writers also in African literature series, तो वहाँ पे भी हमें ये बायफ्रान वॉर का जिक्र मिलेगा, तो डू रिमेम्बर दिस वन, 1967 से 1970। Excuse me. Now let's begin with the first question। ये DSSSB PGT English 2024 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। It is very important। In Wole Soyinka's A Dance of the Forest, how does the portrayal of Yoruba culture, याद रखें आप, Yoruba culture contribute to the play's exploration of traditional values and societal critiques। ये क्वेश्चन खुद में ही, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे अटेम्प्ट करते वक्त, while talking to few of the students, उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने इतना ना पढ़ते हुए उन्होंने जल्दी जल्दी उसको देखा कि इट प्रेजेंट्स योरूबा कल्चर एज इरेलेवेंट, तो ये नहीं था। जिन्होंने ये डांस ऑफ द फॉरेस्ट पढ़ा हुआ है द प्ले, दे विल नो इट। इट emphasizes individual achievements and personal successes, third number, fourth number। So if you'll see the first option, it showcases the Yoruba cultural rituals and beliefs as a means to reflect upon the importance of adhering to traditional values and customs and resolving societal problems, as well as engaging with traditions in a way that is dynamic and relevant to the present। So obviously this is the answer। So isko you can go through all the options, but just to give you an idea किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो obviously in TGT and the upcoming PGT examination also you may see certain kind of questions। Let's go to the next one। In which year was A Dance of the Forest first performed? Dance of the Forest, obviously the novel that we were talking about, the cultural thing, so it was first performed in 1960s को आप याद रखेंगे। And the Biafran War I just talked to you about was 1967 से 70, remember this one also। Next, how does the play A Dance of Forests begin? ये भी DSSSB के PGT इंग्लिश एग्जाम 2024 में इसको पूछा गया था। So how does the play A Dance of the Forests begin? So you have ओबानेजी अपीयर होता है, डिमोक पनिश कर रहा है, Aroni casting a spell, the dead man and dead woman coming up out of the soil। डेड मैन और डेड वुमेन है जो कि सोइल से बाहर आ रहे हैं। दिस इज द आंसर। ओके, एंड इफ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट गो थ्रू द समरी ऑफ द प्ले, द कैरेक्टर्स, इट विल बी हेल्पफुल ऑब्वियसली। इन अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट व्हाट इवेंट इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द विलेज? विलेज में कौन सा सेलिब्रेशन है, क्या इवेंट है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो द आंसर वुड बी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। नाइजीरिया का इंडिपेंडेंस का वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि नाइजीरिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1960 में हुआ था। द सेम ईयर द बुक वाज रिलीज्ड, द प्ले सॉरी। एंड कीनिया का इंडिपेंडेंस ठीक 3 साल बाद, मैंने बताया था आपको, 1963 में हुआ था। नाइजीरिया का इंडिपेंडेंस इफ यू विल बी प्रिसाइज तो इट वाज 1 अक्टूबर 1960। The play A Dance of Forest is best categorized as, ये क्या है? ये क्वेश्चन, it is very important question। A Dance of Forest, what kind of a play it is? So it is post-colonial allegory। Post-colonial allegory है ये, remember this one। Now who are the two characters representing the dead man and dead woman? क्या वो गांव वाले हैं, क्या वो स्पिरिट एंसेस्टर्स हैं, क्या वो विक्टिम्स ऑफ पास्ट इनजस्टिस हैं, या प्रीस्ट हैं? ऑब्वियसली दे आर द विक्टिम्स ऑफ पास्ट इनजस्टिस। अगर आप देखेंगे तो
They are victims of past injustice. This is the correct answer. The play, again we are moving to the next one. The play Death and the King's Horseman is based on which cultural tradition? किस cultural tradition पे Death and the King's Horseman based है? Answer would be ritual suicide following a king's death. Remember this one? As the name suggests, the name of the play suggests. So it is based on ritual suicide following a king's death. Next one is, what is the name of the king's horseman in the play? किंग का जो हॉर्समैन होता है प्ले में उसका नाम क्या होता है? आंसर इज एलिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द प्ले Death and the King's Horseman, which colonial officer intervenes in the ritual? रिचुअल के बीच में बाधा कौन सा किंग डालता है? इज इट ब्राउन, पिल्किंग्स, स्मिथ और कैप्टन रॉस? आंसर इज मिस्टर पिल्किंग्स. याद रखेंगे इसको भी. What does Ellison represent in Death and the Kingsman Horseman, King's Horseman? तो एलिसन क्या represent करता है? एलिसन the traditional custodian of ritual and honor को एलिसन represent करता है. Move to the next question. Which themes are central to The Man Died? Again, The Man Died is the next work, and the options are love and betrayal, political oppression, religious satire, and romantic nationalism. The answer would be B is the correct answer. Political oppression, imprisonment, and resistance. The theme भी याद रखेंगे. Previous questions में if we have not discussed the themes, you may please go through the themes. What is The Man Died primarily about? क्या ये वॉर स्टोरी है? प्रेजेंट एक्सपीरियंस है सोइंका का नाइजीरियन सिविल वॉर? देखो अगेन ऑप्शन में भी ये चीजें आ गई हैं 1967 से 70, लाइक वी हैव डिस्कस्ड, राइट. एंड नाइजीरियन सिविल वॉर का हम we will also see elements being used in half of a yellow sun, which we will be covering later. Half of a yellow sun, इसको भी when we will be covering it, तो हम यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे. So the answer is B option. The Man Died primarily, it is about Soyinka's experience during the experience of Soyinka in prison during civil war when he was in prison. What literary form is used in The Man Died? The Man Died जो है क्योंकि ऑब्वियसली सोइंका के एक्सपीरियंस को बताता है, उसमें एपिक पोम यूज हुआ है, प्रोज मेमोयर यूज हुआ है, नॉवल है और इट इज अ ड्रामा. इज इट मेमोयर? यस, प्रोज मेमोयर, right? Please remember this one. Now, the title The Man Died symbolize. The Man Died, ये क्या सोइंका के फादर के डेथ को दर्शाता है? Is it a metaphor for silence in the face of injustice? Is it literal execution or a tribal custom? Answer is a metaphor for silence in the face of injustice. Obviously, he just wanted to be the mediator in the war, in the Biafran war, which we just discussed. And because of that, he had to go for months, almost 22 months of jail he was in. He was jailed. So it is a metaphor for silence. Who is the chief suitor competing for Siddhi's hand in The Lion and the Jewel? Again, another work by Wole Soyinka. Who is the chief suitor competing for Siddhi's hand in The Lion and the Jewel? 4 options are given to you. The correct answer would be Baruka. Remember this one, Baruka, the chief suitor for Siddhi's hand. Lakunle represents which aspect of Nigerian society in the play The Lion and the Jewel?
लाकुनले जो कैरेक्टर है वो कौन से एस्पेक्ट, नाइजीरियन सोसाइटी के एस्पेक्ट को, क्या ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, कॉलोनियल मॉडर्निटी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को दर्शाता है। तो इस तरीके से भी दे कीप यू आस्किंग क्वेश्चंस, जहाँ पे दे विल गिव यू क्वेश्चन, दे विल गिव यू द नेम ऑफ द कैरेक्टर एंड देन दे विल आस्क यू कि what they represent in the text or what they represent in the play or in the novel. So the answer would be colonial modernity को वो दर्शाता है लाकुनले. Remember this one. In the play The Lion and the Jewel, what role does Sadiku play in Baruka's plan to marry Sidi? वो कौन सा रोल प्ले करता है? सदीकू जो है बरूका के प्लान, सीधी से मैरी करने का जो प्लान है बरूका का, उसमें सदीकू किस तरीके से हेल्प करता है या किस तरीके का रोल वो प्ले करता है? She opposes the marriage. She falsely claims Baruka is important. Obviously, she elopes with Lakunle. She warns Sidi about Baruka. Answer is she falsely claims Baruka is important. Next question is Wole Soyinka received the Nobel Prize in which year? किस साल में वोल सोयिंका को नोबेल प्राइज मिला था? It is 86, 1986, right? Is the correct answer. Remember this one also, please. Now, yeah, so the four work that we have, one of the most important thing to remember is the year, the form, the art form that it is, protagonist and what it is about, themes, background, etc. So, Lion and the Jewel, 1959, 1960, Dance of the Forest, the second work, The Man Died, 1972, and Death, The Man Died is obviously 1967 से 1970. We talked about Nigerian civil war, in between which Soyinka was in jail. So The Man Died was a memoir about his experience, political repression. So we have to go through these things. The Lion and the Jewel, the year of publish was 1959. It is a play. The Lion and the Jewel, it is a play. Protagonist, you have to remember the name, Baroka, Sidi, Lakunle. Do remember it, write it, note it down, revise it. And themes, if you'll see, please go through the themes. Dance of Forest, one of the most important. Again, it is a play published in the year 1960. Protagonist, if we talk about, we have very, very, very interesting characters in this play. So if you have time, please go through the summary. The dead man and woman Aroni, and post-independence disillusionment, ancestral guilt, spiritual reckoning, cyclical nature of history. तो ये सारी चीज़ें आपको themes हैं. The Man Died, 1972. It is a memoir. Wole Soyinka himself, उनके खुद के बारे में है. Experience during Nigerian civil war जो उनका हुआ था, it is about that. The last one is Death and the King's Horseman, 1975. It is play. Again, so the three are play, and the one The Man Died is a prose. The protagonist in Death and the King's Horseman is Alison Olunde. Now, clash between Yoruba tradition and British colonial authority. So, obviously, in all the African history, if you'll see, so this is one of the major themes that we have come across. Duty, death, is spiritual order, cultural misunderstanding. So these are the points that we have to see and learn. So this is the end of the video for today. Thank you very much. Thank you for watching. Like, share and subscribe. And again, as promised, I will be sharing once I have a few subscribers, I will be sharing the notes with you also in a printable format. So keep watching. Like, share and subscribe once again. Thank you very much.